दर्शक महानुभावहरू, आज विश्व संस्कृत दिवस विश्वभरि मनाइराखिएको छ। संस्कृत भाषाको महत्त्वता, प्रभाव र अपरिहार्यताको बारेमा आज तपाईहरु समक्ष म केही लिखित संस्कृतका वाक्यहरू प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। यसलाई बुझ्ने र धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिने कोसिस गर्नुहोला। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी। आज चतुर्थ विश्व संस्कृत दिवस र आज विश्वभरि संस्कृत दिवस मनाइराखिएको छ। संस्कृत भाषाको महत्त्व, संस्कृत भाषाको अपरिहार्यता, संस्कृत भाषा को चाहिँ प्रभाव र यसको पुनर्स्थापनाको आवश्यकता, यिनै विषयमा आज म तपाईहरु समक्ष केही प्रस्तुतिहरू राख्न गइराखेको छु। दर्शक महानुभावहरू, यो अति महत्त्वपूर्ण विषय हो र यसलाई मैले संस्कृत भाषामा नै कयौं दर्शकहरू संस्कृत भाषा नबुझ्ने हुनुहुन्छ, बुझ्नुहुन्न, कठिन होला, तर सरल संस्कृत भाषामा मैले प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सम्झिनलाई सजिलो होस् भनेर मैले सरल संस्कृत भाषा चुज गरेको छु र यसमा म केही महत्त्वता, संस्कृत भाषाको महत्त्वता र यसको अपरिहार्यताको बारेमा केही भन्न गइराखेको छु। यो भिडियो तपाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्परा को जागरण गर्नको लागि, संरक्षण सम्वर्धन गर्नको लागि अति आवश्यक छ। दिन प्रतिदिन हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कृत भाषा, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कार क्षीण हुँदै गइराखेको छ। कारण संस्कृत भाषाको लोप हुनु यसको मूल कारण हो। समाज दिनानुदिन अमर्यादित हुँदै गइराखेको छ अनि असभ्य हुँदै गइराखेको छ। सम्पूर्ण हाम्रा परम्पराहरू क्षीण हुँदै गइराखेका छन्, कारण संस्कृतको लोप हुनु नै हो। त्यसैले गर्दा आज म धेरै समय नलिकन विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु र यी विषयहरू जति मैले यहाँ समेट्न गइराखेको छु तपाईहरुको समक्ष राख्न गइराखेको छु। विद्वान वर्गहरू पनि, विद्वानहरू पनि हुनुहुन्छ, दर्शकहरू, तपाईहरुले हेरेर सुनेर यसको सम्बन्धमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव सकारात्मक ढंगबाट र सभ्य ढंगबाट दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा राखेको छु। अब म विषयवस्तु र आजको प्रस्तुतितिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यो पूर्ण संस्कृत रूपमा नै अन्तिमसम्म रहनेछ। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम मित्राणि, अद्य विश्व चतुर्थ संस्कृत दिवस अस्ति। अद्य चतुर्थ विश्व संस्कृत दिवस अस्ति। सर्वेभ्यः संस्कृत समुपासेभ्यः विश्व संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्ये हार्दिकी शुभकामनाः प्रस्तौमि। संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्ये भवतां समक्षे संस्कृतस्य महत्त्वं किं, संस्कृतस्य अध्ययनेन कः लाभः, संस्कृतस्य प्रचार प्रसाराय अस्माभिः किं कर्तव्यं, राज्येन च किं कर्तव्यम् इत्यादि विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। इदानीं विश्वे चतुर्थ संस्कृत दिवसस्य प्रचार प्रसारश्च नितरामेव आयमानो विद्यते। तत् सर्वमेव सर्वैः स्वस्थानतः प्रयत्न विधीयमानो वर्तते। अस्माकं संस्कृते संरक्षणार्थं संस्कृत भाषा संरक्षणीया एव। इदानीं समये संस्कृत भाषायाः महत्त्वं बोधयितुम् अस्माभिः सर्वैः प्रयासः कर्तव्यः। न केवलं नेपालदेशे अपितु विश्वेषु संस्कृत भाषायाः प्रचार प्रसारश्च नियमेन
आयमान क्रियमाणश्च वर्तते। अयं प्रयास अग्रे अपि न्यूनमेव भविष्यति इति अहं मन्ये। संस्कृत भाषा देवभाषा देववाणी गिर्वाणवाणी च अस्तीति आयते। इयं च भाषा व्याकरणे परिष्कृता प्रविद्धा प्रस्तुता च वर्तते। यदा विश्वं खलु पाषाणयुगे आसीत् तदा देवस्थ संस्कृत भाषाया एव शिक्षा विस्तारिता। इयं भाषा जीवनदायिका कर्तव्य बोधजनिका सन्मार्ग प्रदर्शिका च अस्ति। सर्वमपि वैदिक वाङ्मयं संस्कृत निबद्धमेव वर्तते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम्, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, धर्मो रक्षति रक्षित इत्यादीनि सदाचार बोधकानि औषित सदाचार बोधकानि औषित नैतिक शिक्षा अवबोधकानि वाक्यानि संस्कृते एव निबलितानि सन्ति। संस्कृत भाषा लोकभाषा भवेत्। संस्कृतस्य अध्ययनेन सर्वे नैतिक शिक्षा प्राप्नुयुः इति संकल्पेन कार्यकर्तव्यम्। जगत्यास्मिन् बहवः प्राणिनो निवसन्ति। ते सर्वेपि परस्परं भाषामाध्यमेन स्वव्यवहारं चालयन्ति। संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीन समृद्धा च वर्तते। इयं च भाषा जगति विद्यमानासु सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः भाषा विद्यते। सम्प्रति प्रचलिता या कापि भाषा विलुप्ता च या कापि भाषा वा आसीत् तासु सर्वासु अपि भाषासु संस्कृत भाषाया प्रभावः आसीत् वर्तते च। इयं च भाषा संस्कृता सकल दोषरहिता च। संस्कृते मूलम् इत्यनेन संस्कृते मूलं संस्कृतमेव इति ज्ञायते। संसारे नैकविद्या संस्कृतया वर्तते। प्रत्येकं संस्कृतिषु भिन्ना चिन्तनशैली दृश्यते। संस्कृते संरक्षणं कर्तव्यं चेत् सर्वप्रथमं संस्कृतस्य संरक्षणं कर्तव्यं भवति। अनादिकालतः अविच्छिन्नरूपेण प्रचलति सति इयं संस्कृत भाषा विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वप्राचीन ग्रन्थेन प्रसिद्ध ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेद, उपनिषदं पुराणानि, पौरस्त्य साहित्यं, पौरस्त्य दर्शन सम्बद्धाश्च ग्रन्थां संस्कृत भाषायामेव निबद्धां वर्तते। अतएव अस्य संस्कृत भाषाया सर्वोत्कृष्ट सिद्धति। वैदिक काल एव आरभ्य इदानीं यावत् अविच्छिन्न रूपेण संस्कृत भाषा प्रविद्धा प्रसिद्धा च वर्तते। वेदादय प्राचीन ग्रन्थाः संस्कृत भाषायामेव निबद्धा। अतः संस्कृत भाषा कदारभ्य प्रवृद्धा प्रसिद्धा इत्यस्य मानव जीवनं सन्मार्गो निर्दशति। प्राचीनानां मनीषिणां तपसा लब्धं
ज्ञान विज्ञान मानव जीवनं सन्मार्गे निर्देशति। अतः प्राचीन ज्ञान विज्ञानस्य कला संस्कृति साहित्यस्य इतिहासस्य च बोधनार्थं न्यूनमेव संस्कृत भाषाया ज्ञानम् आवश्यकं वर्तते। संस्कृत भाषाया सम्यक् ज्ञानार्थं संस्कृत व्याकरणस्य ज्ञान विना न संभवति। जनो व्याकरणस्य अध्ययनान्तरमेव शास्त्रान्तरस्य अध्ययने अधिकारी भवति। अस्माकं समुदाये क्रियमाणानां देवपितृकर्माणां निष्पादकतया इयं संस्कृतभाषा देववाणी गीर्वाणवाणी इत्यादि पदैः व्यवह्रियते। अन्य भाषायां तद् लिख्यते तन् उच्यते यद् उच्यते तन् लिख्यते परन्तु संसारस् विविध भाषासु मध्ये अस्यां संस्कृत भाषायां पद लिख्यते तदेव उच्यते यद् उच्यते तदेव लिख्यते। अतः अस्य संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यं वर्तते। महाभारत पुराण काव्य नाटकादय ग्रंथा अथ च प्राच्य ज्ञान विज्ञान कला संबद्धा ग्रंथा संस्कृत भाषायामेव निबद्धा सन्ति। पौरस्य पाश्चात्य विद्वांस पाणिनि व्याकरणमिदम् उन्नतकण्ठेन सदैव प्रशंसन्ति। सर्वभाषापेक्षा इयं संस्कृतभाषा व्याकरणदृष्ट्या सुव्यवस्थिता वैज्ञानिकी च वर्तते इत्यपि विद्वत् लोकः सहस्र स्वीकरोति। कतिचित् सर्वेभ्यः पूर्व नेपाल देशस्थ संस्कृत विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षा प्रदीयते स्म, परन्तु कैश्चित् मूर्खै विद्यालये संस्कृत न पाठनीयम् इति रीत्या संस्कृतोपरि महान् आघातः प्रदत्तः। संस्कृत शिक्षां विना जना कथं संस्कारयुता भवेयुः, कथं च नैतिक शिक्षां प्राप्नुयुः। संस्कारस्य अभावे नैतिक शिक्षायाश्च अभावे जना कथं स्वजीवनं साफल्यं कर्तुं भवेयुः। संस्कृत शिक्षाया अभावे जना संस्कृतहीना आचारहीना कर्मबुद्धियुता न्यूनमेव भवन्नेव। दृश्यते च तथैव जना सर्वत्रापि लोके अतः संस्कार प्रवर्धनाय आचार संवर्धनाय सद्बुद्धि प्राप्त्यर्थं च अस्यमेव संस्कृतस्य अध्ययन आवश्यकम् इत्यञ्च नास्ति संशय। यदर्थं न केवलम् एकेन जनेन प्रयासो विधेय अपितु सर्वैरपि स्वस्थानतः प्रयास कर्तव्यं। वस्तुतः संस्कृत शिक्षा प्रति राज्यस्य सहजा दृष्टि आवश्यकी। विद्यालयेषु संस्कृतस्य पाठनं पुनः प्रारम्भणीयम्। एतदर्थं राज्येनैव तादृशीं नीतिं विधेय। नेपाल देशे विद्यमानेषु विद्यालयेषु संस्कृत शिक्षाया अध्यापने नैकविध्या समस्या दृश्यते। मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकासाय संस्कृत शिक्षाया आवश्यकं भवति। नैतिक शिक्षायां सदाचार शिक्षायां च प्राप्तुं संस्कृत अपरिहार्यमेव वर्तते। संस्कृत शिक्षाया एव मानवता सम्पद्यते। संस्कृत शिक्षां प्रति जनानां मन कथं आकर्षणीयमित्यत्र राज्यस्यैव नीतिः अपेक्षिता भवति। अनेनैव संस्कृतस्य
कियत् वैशिष्ट्यं महत्त्वं वा वर्तते इति वयं जानीम। अन्ते सर्वेभ्यः पुनः एकवार विश्व संस्कृत दिवसस्य उपलक्ष्ये शुभकामनां प्रदाय मम वाणीम् अत्रैव विरमति। अस्तु। जयतु नेपाल, जयतु संस्कृतम। नमस्कारः। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्। चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित झुटानाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।